Indian students actually get additional benefits that no other student gets in the world, which is they get an additional year of what's called post-study work rights. only child থেকে রাতারাতি জয়েন্ট ফ্যামিলি জয়েন করা, সব কাজিনসদের নাম মনে রাখাটাই তো। চল চল সবাই এসে গেছে। এত বড় স্টার্টআপের ফাউন্ডারের সাথে বিয়ে হলে অর্ধেক সময় তো ওই ভিডিও কলেই কেটে যাবে। নতুন ঘরবাড়ি, নতুন ফ্যামিলি, নতুন নিয়ম কানুন। বিয়ের পর অনেক কিছু পাল্টে যায়। কিন্তু শুধু আমার জন্য কেন? অনুরাধা, জয়, শুভ্র আর ডাকনাথ এই যে নিজের স্টার্টআপ নিয়ে এত বিজি থাকে, বিয়ের পরে কতটা টাইম বার করতে পারবে জানি না। ভাগ্য ভালো, বিয়ের জন্য টাইম বার করতে পেরেছে। করতে হয়েছে। নতুন জীবন শুরু করার দায়িত্ব কিছুটা আমার, কিছুটা আমাদের। ঐতিহ্যকে ধরে চলি, নতুন গল্প লিখে চলি। আমরা রিভার কোণে, আমরা বাংলার ঐশানী। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, महानगर में ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर का आगाज हो चुका है और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ओर से ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कमिश्नर नन अदर देन विक सिंह जी। पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं सर। Namaskar and thank you. सर, पहले तो ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोग मतलब पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, इच्छुक छात्र और छात्राओं के उद्देश्य में आप क्या कहना चाहते हैं सर? Look, I think it's a very, very opportune time for Indian students. I was telling some of your colleagues before, Indian students are some of the most well-regarded students in the world. Every country wants Indian students to come and study with them. Okay. Do your research, make your decision wisely. And of course, we want you to choose Australia. We want you to choose Australia because we are a warm, welcoming and open destination. Indian students actually get additional benefits that no other student gets in the world, which is they get an additional year of what's called post-study work rights. So they get one additional year of that because of the strong relationship that India and Australia have. But my advice to all students is do your research. I went overseas to study 25 years ago. I was exactly where they are now. Researching, speaking to US universities, UK universities, Australian universities. I chose Australia as my preferred destination. Never look back. ओके। आज के इस एजुकेशन फेयर में कितने यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ बताएं। So there are about 20 institutions that are traveling with us today. Okay. A lot of our universities represent our major cities or major states, and some from our regional smaller cities as well. Okay. So have a chance, if you have a chance, speak to some of the universities. As I said, they're world-class universities. Majority of the universities here today, and actually I think I can see 3 or 4 already that are here, are in the top 100 universities in the world. ओके। और काउंसलिंग का जो जरिया या प्रक्रिया है उसके बारे में कुछ बताएं सर।
Australia is transparent. We focus on one thing, which is to make sure that information is available freely to students. Okay. Number one thing for students is to look at the Study Australia website. So there'll be a link over here, Okay. studyaustralia.gov.au. It's a government website that we run. It's got all the information a student needs to know about studying in Australia, finding the right course, connecting with the provider, finding out about visa options that are available, finding out about work rights when they're there, the protections that they get. Everything is available clearly on the website. Similarly, when it comes to visa deep dive, you can go to what's called the Home Affairs website, so dha.gov.au. So all that information is available freely. And of course, our universities have representation across India, and you can meet all of them here today. They'll speak to you about the various processes and procedures to apply, and we're all here to help you. इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आप क्या कहना चाहेंगे सर? अगर आप कोलकाता में हो, so come down to the JW Marriott. We'd love to see you here. The Festival of Australia is open to everyone. Get a chance to sample some of the Australian produce, see the Australian, goods on Indian supermarket shelf, listen to a masterclass, or just have a good time. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर. Thank you. নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট।